Four different types of asexual reproductive methods we have studied in the last class. That is about fission, budding, then I think this one is also completed in the last class, okay, and one more is about sporulation, one more fragmentation, right? So now another methods of asexual reproductive structures are, that is sporulation, vegetative and parthenogenesis. So that the Gymme and Protonema is also completed, leave that. So now we'll discuss the another three asexual reproductive methods in different types of organism. So first we will see about sporulation. Many number of the organisms are there. They have the ability to reproduce their new organisms without fusion of gametes. Instead of word without fusion of gametes, so we can use the word that is without fusion of spores. Means by the formation of spores, the new offsprings are produced. By the formation of spores, the new offsprings are produced, which are called as sporulation. If you take the example of the chapter biological classification, so you have studied the example of fungi or mycota, and if you take the example of chapter number 3 plant kingdom, in algae also you have studied the spores word. Like for example, when we see the complete description related with asexual spores, in fungi you have studied the asexual spores are, that is zoospores, sporangiospores and conidia, right? And if you take the example of algae, so in algae you have studied two types of the asexual spores. Number one is zoospores, number two is aplanospores. What are the difference between zoospores and aplanospores, which we have studied in the first year? Zoospores are motile and aplanospores are non-motile, but both of them are asexual spores in algae. And what we have studied in the algae, so that is whatever the asexual spores are there in the form of zoospores, so in which we have studied, if you take the example of chlorophysi members, whatever the zoospores are there which are motile, but the number of flagella are, that is 2 to 8, and the size is, that is equal, and the location is apex, okay. So what is the asexual spores zoospore character in chlorophysi members? That is non-motile zoospores, motile zoospores, and in motile how many number of the flagella are there? That is about 2 to 8, and the size is, all the 2 to 8 are equal, and the location is at the apex, right? But when we take the example of, that is the Phaeophysi members, that is also motile. In Phaeophysi members there the zoospores are motile. The number is 2, okay. Size is unequal. Only 2 are there, but one is larger, another one is smaller. And the location is also different. What is the location? That is at the lateral side, right? But what here we have to take, in algae, asexual spores are present in the form of zoospores, in the form of aplanospores. Whereas in mycota or fungi, asexual spores are present in the form of zoospores as well as conidia or sporangiospores, right? But here we have to take only 2 lines. So here, by the formation of asexual spores produce the offsprings, that is called as sporulation, and here the common sporulation occurs in
algae and fungi. Related with this chapter, the example of the algae is Chlamydomonas, and the example of fungi is given, that is about Conidia. Example of algae in this chapter is given Chlamydomonas, and in the fungi the example is given, that is about Conidia. Okay, so Conidia asexual, that is about Penicillium, and in which the asexual spores are, zoospores, and in Penicillium, Conidia. Now, one of the out of NCERT line, just now I got that information, that is, this line is given in your book, okay, that is in Chlamydomonas, asexual spores are zoospores, okay. This is one of the extra character for you also, that is, sometime the question may be asked in different forms. Directly they will not use the word zoospores. They will give the option, that is, what type of asexual zoospores are present in Chlamydomonas? Number 1, the option will be 2 to 8. Okay, I want the answer, okay? Don't give me the answer with your voice, you can tell like this. Okay, first option is how the asexual zoospores are present in Chlamydomonas. Option 1, 2 to 8, unequal at apex. Number 2, 2 to 8, equal at apex. Third, 2, equal at lateral site. Fourth, 2, unequal at lateral sides. So which option we have to take? I have not told about that is which category. Directly I given the name, that is in Chlamydomonas. So which option we have to take? 1, 2, 3 or 4. Which one is correct? That is about, so that is 2. Means before few minutes I have used the word, that is chlorophyci में ऐसा होता है, phaeophyci में ऐसे होता है, right? और rhodophyci में तो totally that is about aplanospore, non-motile. So remember, sometime that first year link can be asked with this one. Directly they will not give the word zoospore. So remember, they will give the option in the form of, that is, Chlamydomonas is an example of chlorophyci. So chlorophyci character you should be remember what? That is 2 to 8. Okay? 2 to 8 flagellated, 2 to 8 flagellated zoospores, comma, unequal, okay, equal, and one more word is what? Apex. Okay, if we want to take the diagram, so like this you will get, zoospores are nothing but first word should become in the form of flagella, okay, but the number of flagella, that is 2 to 8, and at the all of them should be equal. So how many you want, you can write here, that is all of them should be equal and at the apex. Okay, so this is about the flagellated zoospores, maybe in between 2 to 8 and present at the apex. So like this the option may be given, but here in this chapter directly they have given in Chlamydomonas the asexual spores are zoospores, but that is the character of zoospores in Chlamydomonas. Okay, now in fungi example is Penicillium
and the asexual spores are conidia. The asexual spores are conidia. Now, here also one more point. Sometimes they will change the word. Instead of conidia, they can give the option sporangiospores. 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 Okay. So by the formation of spores, this point you have to remember. Now, next one is about vegetative. Next one is about vegetative. Now, the word vegetative is related with, what is the meaning of this word vegetative? Asexual reproduction in the plants. What is the definition or what is the meaning of vegetative? That is asexual reproduction in plants. Asexual reproduction in plants, that is called as vegetative reproduction. Now, if the reproduction occurs with the help of germ cells, means sex cells, this one character will comes, means through the gametes. Germ cells means through the gametes. In animals, through the body cells, we cannot produce the new offsprings. Whereas in the plants, through the germ cells, they have the ability to produce a new offspring, that is sexual. And in plants, through the vegetative part, means through the root, through the stem, through the leaf also, they have the ability to produce a new offspring. That is called as vegetative reproduction. Vegetative reproduction. Directly through the root, through the stem, through the leaf, they have the ability to produce a new offspring, which is called as vegetative reproduction. But if we take our own example, with our hairs, with our skin part, okay, or any other organs of our body, part, except that is about gonads, except gonads, we cannot produce a new offspring. But in plants, they have the ability to produce. And remember one word, any part of the plant body, any vegetative part of the plant body which have the ability to produce a new offspring, that particular part is called as vegetative propagules. That part is called as vegetative propagules. Okay? So now, in morphology of flowering plant in the first year in the morphology of flowering plant, already you have studied this topic. Okay? That is rhizome, tuber, corm, bulb, runner, offset, stolon, sucker, okay? Then about phylloclade. Many example or many categories you have studied, but here they have given about only 8 categories or 8 example. With 5 they have given with the diagrams. So now you can see here, vegetative reproduction in plants either may be in the form of or through the rhizome, that is about tuber, and third one is about bulbil, fourth one is about offset, then fifth one is about leaf bud, okay, then fifth, then sixth, they have given the word that is bulb, runner, offset over. Now next one is sucker. Now
So what are the example will comes in this? So here the tuber example is, so rhizome example is so ginger, banana. Then second one is about tuber, potato. Then bulbil, agave, offset. Two example we have studied in the first year, okay? That is Eichhornia, Pistia. Then next one is about leaf bird, Bryophyllum and Kalonchi. Then about the bulb, onion, runner, grass. Then about the sucker, that is chrysanthemum, okay. So here in these organisms no need for flower for their producing the new offsprings. In these angiosperm plants, they are not dependent on sex organ. Okay, in these organisms they are not dependent on their sex organ. Without sex organs also they have the ability to produce their new offspring. That process is called as vegetative reproduction. Okay, if you take our own example, without sex organs we cannot produce our new offspring, right? We cannot produce our new offspring. But here some of the plants are there, without reproductive organs also they have the ability to produce their new offspring. Okay, because they are having the specialized structure in the form of vegetative propagules. Okay, so this is about what? Vegetative reproduction will occur in the plant with the help of vegetative propagules. Okay, now the next one is about parthenogenesis. Okay, फर्स्ट पॉइंट, रिमेनिंग अब तक मैं किसी में भी नहीं लिखा हूं, इसमें फर्स्ट साइंटिस्ट का नेम लिख रहा हूं मैं, और वो भी आपकी बुक में नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन नीट स्टूडेंट के लिए ये आएगा, थ्योरी वालों के लिए कोई यूज नहीं है. नीट स्टूडेंट यू शुड बी रिमेंबर अबाउट दिस वर्ड. ओके, दैट इज द पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय दैट इज चार्ल्स बोनेट. Parthenogenesis was first given or discovered by Charles Bonnet. First point. Okay. Now, what is the meaning of the word this parthenogenesis? Directly from the female gamete. Okay, now माइंड में आता है, now we are using the word gamete. ठीक है, थोड़ा अब यहां पर अपना ब्रेन लेकर आना कि मैं स्टार्टिंग में जब आपको आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर बोला था तो उसमें बोला था गैमेट्स आर नॉट फॉर्म, दैट इज agamentogenesis, राइट. लेकिन बोला था मे बी फॉर्म, मे और मे नॉट बी फॉर्म. ओके, सो मे नॉट बी फॉर्म तो पूर्व में अब तक कहीं भी वर्ड नहीं आया. नाउ मे बी फॉर्म, तो याद रखना ये ऐसा कैटेगरी है जिसमें गैमेट बनेगा तो मगर मिक्स नहीं होगा. अगर कैटेगरी में पूछा है, अगर आपको नीट में, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, अभी तक जितने टेस्ट बताए हम उसमें किसी में बोले कि जो है ना द पैरेंटल सेल डिवाइड, किसी में बोले कि जो है ना द पैरेंटल सेल कट, किसी में बोले कि वेजिटेटिव पार्ट, किसी में बोल रहे हैं कि आसेक्सुअल स्पोर्स, राइट.
लेकिन किसी में भी अभी तक जितने मैं आपको टाइप एक्सप्लेन करा 7, किसी में भी मैं वर्ड यूज नहीं करा गैमेट। तो पहला अपने माइंड में स्टोर कर लो कि गैमेट बनते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा प्रोसेस है आसेक्सुअल का जिसमें गैमेट बनते हैं? अगर ऐसे पूछा तो द ऑप्शन विल बी दिस वन। लेकिन आसेक्सुअल के मीनिंग क्या है? बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, मिक्स होना है, राइट। मिक्स नहीं होना उसको हम आसेक्सुअल बोलेंगे, मिक्स होना उसको हम बोलेंगे सेक्सुअल, ठीक है। तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैमेट बनते हैं, ठीक है। लेकिन आधा डेफिनेशन, हाफ डेफिनेशन समझ में आ रहा है, गैमेट्स बनते हैं, लेकिन रिमेनिंग हाफ याद रखो कि फ्यूज नहीं होते। ये दो वर्ड अलग अलग, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पार्थिनोजेनेसिस? दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम द फीमेल गैमेट, या ऐसा भी मेंशन कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द सिंगल गैमेट, डायरेक्टली फ्रॉम द सिंगल गैमेट, directly from the single gamete, development of new offsprings, development of new offsprings directly from the female gamete or from a single gamete, development of a new offspring, right? Development of a new offspring। अभी तक जितना हम लिखे हैं ये डेफिनेशन से हम इसको आसेक्सुअल नहीं बोलेंगे, ये सेक्सुअल हो गया, गैमेट और वर्ड यूज कर रहे हैं, इसीलिए दैट इज एक वर्ड लगाएंगे तो हमको समझ में आएगा ये आसेक्सुअल टाइप है, ठीक है। सो विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, without fertilization, so directly from the female gamete, development of a new individual without fertilization, without fertilization मतलब समझ में आ गया कि मेल और फीमेल मिक्स नहीं हो रहे, मिक्स होने को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। so without fertilization, that is called as parthenogenesis, that is called as parthenogenesis, ठीक है। now वो कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, वो कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्टली एक ही गैमेट से न्यू ऑफस्प्रिंग बनते हैं? कौन से वो हैं? सो प्योरली एनसीईआरटी के 4 एग्जाम्पल याद रखना, एक भी एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है, जो बुक में 4 दिया है वो चारों आपको याद रखना है। दैट इज, सो what are the best examples of parthenogenesis? so commonly जो use होता है that is about honeybees, turkeys, honeybees, turkeys, then इसमें याद रखना some बोल के लिखना, some lizard, पूरा में नहीं होता, ठीक है। सम लिजर्ड्स, कॉमा रोटीफर्स, एक भी मत भूलो, बुक में 4 है, रोटीफर्स। द बेस्ट एग्जाम्पल इन विच वी कैन ऑब्जर्व द पार्थिनोजेनेसिस, दैट इज honeybees, turkeys, rotifers and some lizards, okay। so in which directly from the single gamete, from the female gamete, so they have the ability to produce a new offspring। now why this parthenogenesis we are included in asexual? because we are using the word without fertilization, okay। नाउ फ्यूचर में फिर से और एक बार एक वर्ड आएगा चैप्टर नंबर 2 में, फिर भी हम उसको एक यहां पर मेंशन कर लेंगे, बाद में तो फिर आएगा, और एक भी वर्ड हो सके तो ऐड कर लो। सो वन मोर इज 9th वन, अपोमिक्सिस।
फ्यूचर में फिर आएगा, सेकंड चैप्टर में फिर देखेंगे, अभी फिर भी देख लो। ओके, क्लियर बता रहा हूं मैं कि यहाँ बुक में जब पढ़ोगे सर नहीं है ये बुक में, नहीं, ये है बुक में, सेकंड चैप्टर में आएगा, फिर भी वो असेक्सुअल में कंसीडर होता है, इसीलिए मैं अभी बता रहा हूं आपको एक्स्ट्रा। ठीक है, अपोमिक्सिस, अपोमिक्सिस। ओके, सी हियर, एक पहले क्वेश्चन सुनो, उसका आंसर सुनो, फिर उसके बाद ये एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। ओके, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट कौन सा है? आंसर है सीड एंड फ्रूट। ठीक है, व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स? द आंसर इज सीड एंड फ्रूट। ठीक है, so now I am making one definition, so now will you tell me after that now can you tell me the answer? So whatever I am explaining, that is sexual or asexual. Okay, so now the definition is formation of seeds. What you can say, sexual or asexual? Sexual, right? Formation of seed is the end product of sexual reproduction, right? So formation of seed, it is sexual. So now remember, formation of seed without fertilization, now asexual. Okay, so now future में फिर आएगा, मैं आपको बता दूं, अच्छे से सुनना कि ये जो प्रोसेस है अपोमिक्सिस, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं मालूम है? Apomixis process is asexual, product is sexual. Very specific for NEET exam. The apomixis process is asexual, method is asexual, but product is sexual. तो हमारा भी जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है? टाइप्स और मेथड ऑफ asexual चल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ asexual नहीं चल रहा है। हमारा टॉपिक हेडिंग में क्या लिख के एक्सप्लेन करा था पहले से आपको? मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसीलिए हम इसको यहां लिखते हैं। हम प्रोडक्ट ऑफ असेक्सुअल नहीं पढ़ रहे हैं टॉपिक, हम मेथड्स ऑफ प्रोसेसेस ऑफ असेक्सुअल पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम इसको इसमें लिखते हैं। ठीक है, सो हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोमिक्सिस? सो अपोमिक्सिस आर नथिंग बट व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट, सर आप हम जिसको अगर पहले से नहीं मालूम होगा तो वो बोलेगा, बाद में पूछते हैं क्वेश्चन, सर सीड तो जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, इसीलिए मैं पहले आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, सो फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, यहां तक कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को, पूरा सुनने के बाद फिर क्लियर हो जाता है, इट इज असेक्सुअल। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, formation of seeds without fertilization, formation of seeds without fertilization, formation of seeds without fertilization, that is called as apomixis, apomixis. Okay, now out of NCERT, which of the following scientist first discovered by parthenogenesis? I have told out of NCERT, Charles Bonnet. So here also it is also out of NCERT. Okay, so here the apomixis is discovered by Winkler. The name of the scientist is Winkler. The process of apomixis was discovered by one of the scientists. The name of the scientist is Winkler. Okay, Winkler. Now, what are the examples of apomixis? NCERT का ही है लेकिन सेकेंड चैप्टर का है, यहां पर टाइप्स पढ़ रहे हैं इसलिए अभी बता दे रहा हूं, फिर जब और एक बार देखेंगे। अब आप जब बुक पढ़ते हैं तो एक फैमिली नेम दिया है और एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, अच्छे से सुनना, मुझे बोलना क्या है तुम्हें। एक फैमिली नेम दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन नीट में आपको क्या करेगा?
आउट ऑफ लिंक ऐड कर दे के जो है ना, वो जो फैमिली दिया है उसका एग्जाम्पल डालेगा और जो एग्जाम्पल डाला है उसका फैमिली डालेगा। तो याद रखो, जो एग्जाम्पल दिया है उसका एक्स्ट्रा फैमिली नेम याद रखो, और जो फैमिली दिया है वो किसमें उसका एग्जाम्पल एक्स्ट्रा की याद रखना। तो पहले मैं जो बुक में है वो मेंशन कर दे रहा हूं, दैट इज द एग्जाम्पल्स ऑफ अपोमिक्सिस आर, दैट इज फैमिली एस्टेरेसी, कॉमा देना, कॉमा, and the example is given, that is grass. Okay, family Asteraceae, and example is given grass. Okay, example is given grass. Now ये बुक का है। अभी क्या बोला मैं आपको, फैमिली दिया है तो एग्जाम्पल दिया है तो एग्जाम्पल का फैमिली कौन सा है। So here Asteraceae, in which the example is sunflower. Extra, ठीक है, extra. And grass example is given, the grass belongs to. In the living world, 4 examples you have studied. With their complete, it belongs to kingdom, phylum, class, order, family, genus, species you have studied. Okay, in which you have studied two plants you have studied, mango and wheat. 2 examples of animals you have studied, human beings and that is a housefly, right? So wheat, you have studied about the wheat. So wheat belongs to the family Graminae, but now we are they have given one more word, that is Poaceae. So remember, it also belongs to the same family Graminae, or we can use the word Poaceae. Graminae, sometimes they will give the word Graminae also, Graminae, okay, or Poaceae. So here in Asteraceae and in Poaceae family you can observe apomixis. In sunflower and in grasses you can observe the apomixis, means formation of seeds without fertilization. Okay, इसीलिए आप जब सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें आपको एक वर्ड देता है, क्या, अपोमिक्सिस इज ए मिमिक ऑफ बोल के देता है। मिमिक बोल के वर्ड है, बाद में फिर आके पूछते हैं सर ये क्या है, इसलिए पहले बता रहा हूं, मिमिक ऑफ बोल के दिया। मिमिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मिमिक ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्ड मेंशन किया है। तो मतलब ये है कि आपको प्रोडक्ट मिलता है सेक्सुअल का, लेकिन प्रोसेस है असेक्सुअल का। ठीक है, प्रोडक्ट मिलता है दैट इज सेक्सुअल का, प्रोडक्ट सेक्सुअल का मिल रहा है लेकिन प्रोसेस असेक्सुअल है। याद रख लेना, प्रोसेस इज असेक्सुअल, प्रोडक्ट इज सेक्सुअल। ओके, सो दिस इज अबाउट द 9th टाइप अपोमिक्सिस, 9th टाइप अपोमिक्सिस। ओके, नाउ ये सीड से हो गया, और एक अगर मैं ऐड कर दूं तो और एक 10th वन, ये भी फ्यूचर में नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। जब तब तक 2 वर्ड आ गए हैं तो तीसरा भी ले लेंगे। ठीक है, देखो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, दोनों के लिए कॉमन वर्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू इंडिविजुअल, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, दोनों के लिए आगे कॉमन वर्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, formation of new organism without fertilization, parthenogenesis, formation of seeds without fertilization, that is apomixis. So like the third one is formation of fruits. Now tell me, now will you tell me the answer? Fruit is the end product of sexual reproduction, right? So formation of fruit, that is once again same, that is the end product of sexual reproduction, but without fertilization, so which is called as parthenocarpy.
This also we can add here. Okay, that is formation of fruits. What is parthenocarpe? That is formation of fruits without fertilization. Formation of fruits without fertilization. Formation of fruits without fertilization. Without fertilization. Formation of fruits without fertilization. Now, I have used the word formation of fruits. वो तो अपनी साइड रखो आप, ठीक है. I have used the word without fertilization. If the fertilization will not occur, because of that, in that fruits seeds are absent. Seeds are absent. इसीलिए इसका एक और एक छोटा सा डेफिनेशन बनता है पार्थिनोकार्पी का, बिल्कुल छोटा, इतना पूरा नहीं, छोटा एक डेफिनेशन बनता है. दैट इज अबाउट पार्थिनोकार्पी आर नथिंग बट दैट इज सीडलेस फ्रूट. वन मोर डेफिनेशन. ऐसे फ्रूट जिसके अंदर सीड्स नहीं होते. ओके, व्हाट इज पार्थिनोकार्पे? सीडलेस फ्रूट्स आर कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पी. ओके, तो आई थिंक कितने बार आप खाए होंगे बनाना, ओके, इन विच देयर इज नो सीड्स. पाइनएप्पल, देयर इज नो सीड्स. ओके, सो हियर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पार्थिनोकार्पी आर, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पार्थिनोकार्पी आर, दैट इज banana, pineapple. So banana and pineapple are the best examples of what? Parthenocarpy. Okay, see here, asexual reproduction is completed. Clearly I want to tell you that only the headings what I have explained to you here, that is types के types पूरे mix करके बता दे रहा हूं मैं आपको. That is irregular binary fission. पहले तो फिजन में बाइनरी, फिर बाइनरी में टाइप, इसलिए टाइप्स के साथ बोल दे रहा हूं. हाउ मेनी मेथड्स यू हैव स्टडीड? ओके, हाउ मेनी मेथड्स यू हैव स्टडीड हियर? दैट इज irregular binary fission, longitudinal binary fission, then transverse binary fission, multiple fission, exogenous budding, okay, endogenous budding or gemmules, okay. Then next one is about gymme, protonema, then fragmentation, then sporulation, then about vegetative, and then about that is about next one is about parthenogenesis, then about apomixis, and about the parthenocarpy. Okay, so here what is the main word in all these topic? What is the main word to understand it is asexual? Without fertilization, or without fertilization means what? Without fusion of gametes. Without fusion of gametes. चलो और एक वर्ड भी मैं आपको बता दूं, और एक भी वो भी क्लियर कर दूं. अब बास लोग क्या करते हैं, ये नहीं आता इसमें, ये टॉपिक में, ठीक है, मतलब ये खाली हम एक ओवरी पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं. हो सकता है उसमें फ्लावर होगा, मेल सेक्स ऑर्गन होंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, ठीक है, वो अपनी प्लेस पर. बट हियर हम यहां पर विदाउट फर्टिलाइजेशन की वजह से आई हैव एडेड हियर. ओके, so this is about complete explanation of asexual reproduction characters and their methods. Asexual reproduction and their methods. Understood? Okay.
Okay, see here. In asexual reproduction, one more small topic is there, that is eichornia, okay, which comes under in the category of, that is about offset, which comes under in the category of offset, okay. So now see here, these are the words you have to remember in the eichornia, one of the extra point. So eichornia is first time they have observed in the Bengal because of their beautiful colors of flowers. First time the eichornia comes under in, that is offset, and you know the characteristic features of the offset. You have studied in the morphology of flowering plant. So what are the characteristic features of the offset? The offset are aquatic. The offsets are aquatic. The roots are tuft. The internodes are short. Okay? You have studied these points in first year in purely NCERT line. What are the characteristic feature of offset? Offset are aquatic. Root character is tuft. And whereas the internodes are short. So all these character related with which one? That is about offset. Okay. So in offset the example is eichornia. First time बंगाल में ऑब्जर्व करें, जो स्टैग्नेंट वाटर में रहते हैं, क्या देखकर जो है ना इसको आइडेंटिफाइड करें, उसके ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ फ्लावर्स. ओके, उसके बाद जहां जहां पर भी ये फ्लावर, ये प्लांट देखा गया, वो एरिया में जो है ना बैड स्मेलिंग आना शुरू हो गया. जब साइंटिस्ट या डॉक्टर्स, जो भी डॉक्टर्स में प्लांट डॉक्टर्स, ओके, एमबीबीएस डॉक्टर ने प्लांट डॉक्टर्स जब आइडेंटिफाइड करे कि ये बैड स्मेलिंग आने का रीजन क्या है, सो दे ऑब्जर्व दैट व्हाट एवर द फिशेस आर प्रेजेंट इनसाइड दैट वाटर, दोज फिशेस आर डाइंग. So due to the death of those fishes, that bad smelling will comes. When they identify the reason why these fishes are dying, so they identified that whatever normal oxygen present in those water bodies, those oxygens are drains by these plant. And due to consumption of the oxygen by these plant, the fishes are dying. Hence it is commonly called as terror of Bengal. Hence it is commonly called as terror of Bengal. Okay, this is one of the 4 to 5 lines paragraph is given in your book, that also you have to read. So in today's class completely we have completed about the asexual reproduction. Okay, so in the next class we will start about the sexual reproduction.